Hello everyone, a very fresh good morning to all of you. How are you all today? I hope you all are fine and safe, right? So students, today we are going to start the PA2 syllabus of EVS. Okay, so in your PA2 syllabus there are 3 chapters. Chapter number 8, chapter number 9 and the chapter number 10. Right, these 3 chapters are included in the PA2 syllabus. So today we are going to start the chapter number 8. Circulatory system and excretory system. So students, first of all, what are this system? Circulatory system and excretory system. So this both system are the organ systems. These systems are made of organs. When different organs comes together, they form an organ system. So see, all living beings are made up of cells. All living beings are made up of cells. Now cells are the building blocks of our body. Cells are the building blocks of our body. क्योंकि हमारी जो body है वो cells से बनी हुई होती है. When so many cells comes together, they form a tissue. When so many cells comes together, they form a tissue. When similar tissues comes together, when a group of similar tissues comes together, they form an organ, right? And so many organs comes together, they form an organ system. तो हमारा जो स्टूडेंट्स हमारा जो बॉडी है वो बहुत सारे सेल से बना हुआ होता है, राइट? तो ये जो सेल है इसे हम कहते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स. हमारी बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स कहते हैं. जैसे कि कोई बिल्डिंग बनाने के लिए हमें ब्लॉक्स चाहिए, राइट? एक के एक ऊपर ब्लॉक्स रखते हैं, जब उसको साथ में हम जॉइंट करते हैं तब एक बिल्डिंग बनता है. उसी तरह से हमारी बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स है दिस सेल्स. तो ये सेल्स साथ में मिलके हमारी बॉडी को बनाते हैं. नाउ बहुत सारे सेल्स मिलके एक टिश्यू फॉर्म करते हैं. बहुत सारे सेल्स मिलके एक टिश्यू फॉर्म करते हैं. एंड a similar group of tissues made an organ. और जब ये जो टिश्यूज़ होते हैं वो सिमिलर टिश्यूज जब साथ में मिलते हैं तो वो एक ऑर्गन फॉर्म करते हैं. एंड व्हेन मैनी ऑर्गन्स कम्स टुगेदर दे फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम. सो द सर्कुलेटरी सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम, दिस आर द ऑर्गन सिस्टम्स, राइट? एंड व्हेन all the organ system comes together, they works together, they form an organism. That means a living being. तो सेल से बनते हैं टिश्यूज, टिश्यू से बनते हैं ऑर्गन, सभी ऑर्गन मिलकर बनाते हैं एक ऑर्गन सिस्टम. एंड जब सभी ऑर्गन सिस्टम एक साथ वर्क करते हैं तो वो बनाते हैं एक ऑर्गेनिज्म. दैट मीन्स अ लिविंग बीइंग. व्हेन ग्रुप ऑफ सेल्स कम्स टुगेदर दे फॉर्म अ टिश्यू. व्हेन when the similar group of tissues comes together, they form an organ. When many organs comes together, they form an organ system. And when all the organ systems works together, they form an organism, right? So that is how a living being is made up. So students, in this chapter you will learn about the circulatory system and excretory system. So in our previous standard, right, in the standard 3rd, we have studied about all the organ systems, right? जितने भी ऑर्गन सिस्टम है हमारी बॉडी की, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन सिस्टम्स जो है हमारी बॉडी की, उन सब के बारे में हमने स्टैंडर्ड 3rd में स्टडी किया था. नाउ स्टूडेंट्स, टेल मी, स्टैंडर्ड 3rd में कौन कौन सी सारी ऑर्गन सिस्टम थी जिसके बारे में हमने स्टडी किया था? व्हाट आर दे ऑर्गन सिस्टम्स? यस, स्केलेटल सिस्टम, then muscular system, digestive system, circulatory system, nervous system, respiratory system, excretory system, then reproduction system, right? Skeletal system, muscular system, digestive system, circulatory system, nerve system, respiratory system, excretory system and reproduction system. So we learned about all this type of different organ systems, right? इन सभी different organ system के बारे में हमने in our previous class हमने study किया था. So in this chapter we will learn the circulatory system and excretory system in
detail. Okay, so let's start our today's topic. So today's topic is circulatory system. So let's start. Our body is made up of organ systems. Our body is made up of many organ systems. So बहुत सारी organ system जो है वो जब साथ में work करती है तब एक human being की body form होती है. सारी organ system साथ में मिलकर जब work करती है तब हमारी body जो है वो form होती है. So our body is made up of many organ systems. These organ systems works together so that our body can function normally. This organ systems works together so that our body can function normally. जैसे मैंने आपको बताया कि सारी जो organ systems है वो एक साथ work करती है. They works together to form a organism. जब ये सारे organ system, जैसे मैंने आपको सभी organ system बताई, skeletal system, muscular system, digestive system, circulatory system, right, nerve system, respiratory system, excretory system and रिप्रोडक्शन सिस्टम. तो ये जितनी भी ऑर्गन सिस्टम्स है जब वो साथ में मिलके एक साथ वर्क करती है हमारी बॉडी के लिए तभी हमारी बॉडी नॉर्मली फंक्शन कर सकती है. नाउ जस्ट join the dots and then label the picture correctly. So here they given us one picture, right? Now this picture and this all organs that shows in the body, it is of the circulatory system. राइट तो यहाँ पे जो हमें डॉट्स दिए गए हैं उनको हमें ज्वाइन करना है. एंड कौन सा ऑर्गन है वो यहाँ पे हमें लिखना है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. आप स्टूडेंट्स आप सब अपने हिसाब से इसको ज्वाइन कर लीजिएगा डॉट्स को अपने हिसाब से. ठीक है, लेट्स राइट डाउन दी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिस्टम. फर्स्ट ऑफ ऑल हियर यू कैन सी दिस पार्ट फर्स्ट नंबर. तो ये कौन सा पार्ट है, ये कौन सा बॉडी पार्ट है ऑर्गन का? विच ऑर्गन इज दिस? दिस इज हार्ट. This organ is heart. And the second one, here you can see this two. These two are what? These two are the lungs. These two are the lungs. Then third one, here you can see this. तो ये बॉडी पार्ट कौन सा है, ये ऑर्गन कौन सा है बताओ? दिस इज द ब्लड वेसल्स. दिस इज व्हाट? दिस इज द ब्लड वेसल्स. ये जो ब्लड वेसल्स होती है वो हमारे सभी बॉडी तक, सभी पार्ट्स तक, सभी ऑर्गन तक ब्लड को पहुंचाती है, ब्लड को सप्लाई करती है. देन द लास्ट वन इज हियर. So this organ, it is what? It is kidney. So this is heart, lungs, blood vessels and kidney. Okay, now what you have to do is you have to join all these dots. Okay, now in this chapter we will learn about two more organ systems. They are circulatory and excretory system. Circulatory system help to transport substances, whereas excretory system removes waste from inside the body. तो इन चैप्टर में हम और दो जो ऑर्गन सिस्टम है उनके बारे में स्टडी करेंगे और वो ऑर्गन सिस्टम है सर्कुलेटरी सिस्टम एंड एक्सक्रेटरी सिस्टम. ना जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उनका वर्क क्या होता है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी ऑर्गन सिस्टम है उन सबका कुछ ना कुछ वर्क होता है. वो हमारी बॉडी के लिए कुछ ना कुछ वर्क करते हैं जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है. ना ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्या वर्क करती है हमारी बॉडी में? Circulatory system help to transport substances. Right? Now what are the substances? Substances are called nutrients. Right? What are the different substances? Tell me. ये हमने chapter 1 में study किया था. What are the substances that our body needs? Yes, carbohydrates, fats, protein, vitamins and minerals. All the substances that needed by our body for the growth. So this substances that transport to our all the body parts to the circulatory system. Okay, so the circulatory system help to transport substances where
excretory system removes waste from inside the body. तो सर्कुलेटरी सिस्टम का ये वर्क है कि वो सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करती है बॉडी पार्ट्स में, एंड एक्सक्रेटरी सिस्टम का ये वर्क है कि हमारी बॉडी में जितना भी वेस्ट है उनको हमारी बॉडी के इनसाइड जो भी वेस्ट है उनको रिमूव करती है. सो दिस टू ऑर्गन सिस्टम वर्क्स फॉर आवर बॉडी. ओके, नाउ let's start the system circulatory system. The circulatory system is an organ system that helps to transport substances inside our body. This system consists of heart, blood and blood vessels. So students, circulatory system जो है वो एक ऐसी organ system है जो substances को transport करती है. हमारी बॉडी के अंदर सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करती है सर्कुलेटरी सिस्टम. नाउ सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं? बिकॉज व्हेन अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स कम्स टुगेदर दे फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम, राइट? सो इन द सर्कुलेटरी सिस्टम द ऑर्गन्स आर हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स. सो द सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स. Heart. Heart is a muscular organ that pumps blood to all parts of the body. Heart is a muscular organ that pumps blood to all parts of the body. Heart जो है वो एक muscular organ है students. Heart जो है वो एक muscular organ है जो blood को pump करता रहता है. It continuously pump the blood. Heart is a muscular organ that pumps blood to all parts of the body. सभी बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं उसमें ब्लड को वो पंप करता है. दिस इज द फंक्शन ऑफ हार्ट. सेकेंड वन इज ब्लड. ब्लड इज अ फ्लूइड दैट इज कैरिड बाय ब्लड वेसल्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. इट फॉर्म्स अ मीडियम थ्रू विच न्यूट्रिएंट्स, वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड and waste products are transported inside our body. So students, blood जो है, blood is a fluid, right? Blood can fluid. So blood is a fluid that is carried by blood vessels to all the parts of the body. तो blood जो है हमारे students, हमारी body के जितने भी parts है, right? उन सबको blood चाहिए होता है. तो हमारी body के different parts तक blood कैसे पहुंचता है? Through this blood vessels, right? ये जो ब्लड वेसल्स होती है वैसी थिन ट्यूब जैसी होती है जिसके थ्रू हमारा जो ब्लड है वो हमारे पूरी बॉडी में वो ट्रांसपोर्ट होता रहता है. सो ब्लड इज अ फ्लूइड दैट इज कैरिड बाय ब्लड वेसल्स टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी. इफ फॉर्म्स अ मीडियम थ्रू विच न्यूट्रिएंट्स, वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स आर ट्रांसपोर्ट इनसाइड आवर बॉडी. सो इट फॉर्म्स अ मीडियम. सो ब्लड होता है वो एक मीडियम होता है. जैसे अगर हम कोई भी न्यूट्रिएंट्स है, वाटर है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट प्रोडक्ट्स, ये सभी जो है वो क्या होते हैं, जितने भी ये सारी चीज़ें हैं वो ब्लड के फॉर्म में हमारी बॉडी तक पहुंचती है. It forms a medium through which nutrients, water, oxygen, carbon dioxide and waste products are transported inside our body, right? तो ब्लड के थ्रू ये सारी जो चीज़ें हैं, राइट, ऑक्सीजन, वाटर, न्यूट्रिएंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड, वो हमारी बॉडी को लिए चाहिए ही होता है. तो ये सारी चीज़ें ब्लड के थ्रू हमारी बॉडी तक पहुंचता है. एंड द लास्ट वन इज ब्लड वेसल्स. Blood vessels are thin tubes that are run through the entire body to transport blood. Blood vessels are thin tubes that run through the entire body to transport blood. Arteries, veins and capillaries are the three types of blood vessels. ये जो है ये blood vessels के 3 types हैं, right? So this is the circulatory system. Okay. So this circulatory system consists heart, blood and blood vessels. Circulatory systems contains heart, blood and blood vessels.
Now let's see a animated video so you can clearly see how the circulatory system works. System. Excretory system. Children, we all know that our body is made up of many organ systems. These organ systems work together so that our bodies can function normally. Look at the pictures given. Name the organ system shown in the picture. They are digestive system and skeletal system. Now, let us learn about the circulatory system and the excretory system. The circulatory system helps to transport substances, whereas the excretory system removes wastes formed inside the body. The circulatory system is an organ system that helps to transport substances inside our body. This system consists of the heart, blood, and blood vessels. The heart is a muscular organ that pumps blood to all parts of the body. Blood is a fluid that is carried by blood vessels to all the parts of the body. It forms the medium through which nutrients, water, oxygen, carbon dioxide, and waste products are transmitted inside our bodies. Blood vessels are thin tubes that run through the entire body to transport blood. Arteries, veins, and capillaries are the three types of blood vessels. The excretory system is an organ system that helps in getting rid of wastes formed inside our body. The process by which wastes get removed from our body is called excretion. Okay students, so यहाँ पे आपको ये वीडियो देख के एक आइडिया हो गया होगा कि how circulatory system works to our body. Okay, so circulatory system consists heart, blood and blood vessels. These three has their different works for this circulatory system. Now, blood vessels. So blood vessels has three types. They are arteries, veins and capillaries, right? So these three are the different types of blood vessels. Now students, that is it for the day. So today we learnt about the circulatory system. Now your homework for the day is underline the hard words with me, and they are blood vessels, muscular, then arteries, capillaries. Yes, okay. So students, your homework for today is read the chapter, complete this activity, join these dots and write down the different parts of the body. Then you have to write down these hard words in your fair notebook of EVS. Okay, now if you have any query or any question, you can drop a message. Thank you everyone. Have a wonderful day. Bye bye.